Oude Testament, dan heet God daar Yahweh. है ना, Yahweh. जैसे मेरे सुरीनाम में जहवा शब्द है, लेकिन जाहव और निरुक्त ग्रंथ जो निरुक्त शास्त्र है, Vedische Sanskrit, de Veda's zijn in een Vedische Sanskrit geschreven. En als je de Vedische Sanskrit wil begrijpen, dan moet je de Nirukta Shastra lezen. En Nirukta Shastra में यास्क आचार्य ने अग्नि के कई सिनोनिम दिए हैं. Een van de synoniemen van vuur is Jahva Agnir iti. Jahva Agnir iti. Vuur heet Jahva in de Veda's. है ना? Nou, मैंने कहा प्राचीन Midden-Oosten was niet ver van het Verre-Oosten. India had een goede band toen met elkaar, और भाषा में भी बहुत समानता थी. Mozes, die heeft God Jahwe genoemd. Waarom? Omdat hij God in de vorm van een brandende struik heeft gezien. Hij heeft gesproken met het vlam, met het vuur. Hij heeft niet gesproken met water, nog met aarde, niet met wind, niet met ruimte. Hij heeft gesproken met het element vuur. En omdat hij het element vuur zag, heeft hij God Jahwe genoemd. Vandaar dat God in het christelijke dharma Jehovah heet. Jehovah komt van Jahwe. मैंने कहा तुमने प्रश्न कर लिया, अब मेरा भी प्रश्न एक है. मैं कहा आपको मिलता क्या है घर घर जाके लोगों को बकीर करने में? मैंने कहा माय क्वेश्चन इज टू यू, what is the enjoyment behind your conversion to people? You go house to house, it is nice to tell about your religion, but why are you intimidating and converting people? बोले oh, this is the order of God, that when everybody will believe in one God Jehovah and his son Jesus the Christ and the Holy Ghost, then peace will come on this planet earth. My God, dear, this is the biggest lie I've ever heard in my life. Het is de grootste leugen die hij nu vertelt. कहते कैसे leugen? मैं कहा peace माने vrede. मैं कहा vrede का tegenovergestelde क्या है? कहते oorlog. मैं कहा दुनिया में 2 oorlog हुए. Er zijn 2 oorlogen plaatsgevonden en de derde is nog op komst misschien. ट्रंप और उसका ईरान का चल रहा है इसमें. 2 wereldoorlog हुआ. En beide wereldoorlogen zijn niet gevochten door Hindoes en moslims. En zijn ook niet gevochten door Hindoes en Hindoes of moslim en moslim कौन? Christen versus Christen, protestant versus katholiek, Frankrijk versus Engeland. देख लीजिए, 2 जो थे, एक प्रोटेस्टेंट वो भी यीशु को मानने वाले, कैथोलिक भी यीशु को मानने वाले. मैं कहा if everybody will believe in one God and peace should have come, then why it didn't come during the First World War and Second World War? अब वो दूसरों को देखने लगे तो कहते हैं यस, ये आपका जो कमेंट है इट मेक सेंस. मैंने कहा सोचिए, बाय कन्वर्टिंग पीपल, बाय लेटिंग पीपल बिलीव इन अ सर्टेन गॉड, पीस विल नॉट कम. पीस विल कम ओनली बाय रियलाइजेशन. alleen door realisatie. मानने से शांति नहीं आएगी. कैसे शांति आएगी? जानने से. इसलिए रामायण में बताया सी राम में सब जग जानी. वेद के मंत्र में क्या बताया? ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय. उसको जानने बिना वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्. ऋग्वेद के मंत्र में है. ऋषि कहता है वेदाहमेतम, आई नो दैट गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई नो द गॉड. ईसाई धर्म में तुम बिलीव तो कर सकते हो. एंड als je gaat zeggen ik weet God, ik ken God, Jezus ने पहले क्या बोला था? I am the son of God, God is my heavenly father. तब तक तो ठीक था, सुखी रहो. जिस दिन उसने इंडिया से पढ़ करके वापस आया और अपने लोगों में ये प्रचार करने लगा बैरफरीद में, I and my heavenly father are one, जिसको वेद में कहा सोहम अहम ब्रह्मास्मि. जब उस अवस्था का प्रचार उन्होंने शुरू किया तो पादरियों ने जाकर राजा को कहा ये तो भगवान बनता है, लोगों को बहका रहा, तुम्हें भी हटा देगा किसी दिन. लोग तो इसको क्रोन बांधने लगे, किसकी? बमरा का क्रोन. उसने कहा क्रोन बांध लेंगे, फिर इसको कांटा का क्रोन पहनाओ. प्रेस रिंग में कांटा का क्रोन बना के टांग दिया. किसने टांग दिया? राष्ट्रद्रोह के नाते. तो ईसाई जगत में in het christendom, toen Jezus dit zei, ik en mijn hemelse vader zijn één. Eerder zei hij, ik ben de zoon van God, God is mijn vader. Net als wij zeggen, Twameva Matacha Pita Twameva. In een bepaalde status van meditatie ervaar je zegt het niet, je ervaart Soham. उसके बाद में क्या हुआ? Soham. hetzelfde zien wij in islam. Toen de Soefis hebben gezegd, Anal Haq, Anal Haq, Anal Haq. Anal Haq माने I am God, I am Brahma.
Het is een ervaring. Het is niet iets om te zeggen, maar een ervaring. En toen werd de islam, toen werden de Soefis ook uit islam gezet. Vandaar dat de Soefis de spirituele islam wordt genoemd. Hierbij, ik ben gewoon aan de tijd natuurlijk. थोड़ा सा 10 मिनट में इस टॉपिक को मैं पूरा कर दूं। मैं आपको ये बता रहा था कि साधना में in meditatie hebben wij te maken met verschillende wegen die wij bewandelen om naar ons doel te komen. En wat zijn deze verschillende wegen? Een weg bewandelen, dat heeft te maken met de ritualiteit. Let wel. Dit is wat ik vandaag wilde highlighten. Een weg die men bewandelt, dat noemen wij rituelen. Of het een havan is bij de Arya Samaj, of het een Katha Jhandi Durga Paat is binnen Sanatan. Aye Swami. In ons midden hebben we vandaag Swami Harishanandi uit Gujarat. De rituelen in het Hindoeïsme zijn verscheiden. Je hebt verschillende rituelen, verschillende wegen die naar God gaan. En wat zijn deze rituelen? Vandaar dat wij zien dat ieder die een ritueel heeft vastgehouden, dat heet een sampradaya. ISKCON bijvoorbeeld. In de ISKCON zien wij, de Guru heeft God gerealiseerd middels de naam chanten van Hare Ram, Hare Krishna. Wie ben ik of wie heeft mij het recht om te zeggen dat hij verkeerd is? Dat is ook een weg. De Guru heeft die weg bewandeld en God gerealiseerd. En heeft die methode aan zijn leerlingen overgedragen. Je hebt de Gayatri Parivaar. Daar zie je één Guru heeft de Gayatri mantra in zijn details geanalyseerd. Hij heeft de wetenschap, de Gayatri Mahavigyan onderzocht. En heeft een boodschap aan zijn leerlingen gegeven. Volg deze weg en jij komt daar aan. Wij zijn Swami Dayanand, die het pad van verlichting heeft gewezen middels de Omkar Sadhana. We zien verder verschillende wegen, noem maar op. Kabir Panthi, Nanak Panthi, Dadru Dayal. Het zijn verschillende wegen. En wat zijn deze wegen? Dat zijn de verschillende rituelen. Het zijn rituelen. Maar wat is common in al deze rituelen? Of wat dient common te zijn? Dat is de spirituele verlichting. Het moment dat wij de spirituele uiteinde vergeten, onze doel vergeten en vastklampen aan de rituelen, तो वही गति होगी मिलन वाली। मिलन में पहुंच गए, कहीं जाना था और पहुंच गए कहीं और। इसलिए ध्यान के विषय में आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ध्यान, meditatie betekent jouw gedachten richten naar jouw bron van het leven. Wat zal daarmee gebeuren? Wij zijn continu bezig met de 10 plekken. Janani, Janaka, Bandhu, Sutadara, Tan Dhan Bhavan, Suhrid Parivara. Wij zijn continu bezig. Alle energie stoppen wij hier en wij raken moe. Als wij ons terugtrekken van deze plekken, en dan hoef je niet de hele dag terug te trekken. Nadat je 1 keer jezelf hebt teruggetrokken, en dat noemen wij Trikala Sandhya. Panditji heeft vaak uitgelegd. 3 keer per dag, 's morgens, 's middags en vooravond. Als je niet 3 keer kunt doen, probeer 2 keer. 's morgens en vooravond. Als je zelfs dat niet kunt, probeer na het wakker worden in je bed. En voordat je gaat slapen in bed, probeer dan te doen. En als je dan ook niet kan, dan maar 1 keer. Maar probeer zeker elke dag 1 keer Sandhya te doen. Wat is Sandhya? Sandhya betekent het moment. Sandhi betekent joining. Als de nacht met de dag joint in de ochtend, dat is een Sandhya. Als de middag, voordag met de namiddag joint, dat is een Sandhya. Als de vooravond of namiddag met de avond wil joinen, is dat ook een Sandhya. Probeer in deze Sandhya-kaal jezelf terug te trekken naar jouw bron. En wie is die bron? Zonder dat je theoretisch wordt begeleid, zonder dat je theoretische begeleiding hebt, kun jij niet mediteren. आँख बंद करके बैठोगे क्या दिखाई देगा? 2 मिनट तो भगवान याद आएगा, 3rd मिनट में वही जो बदमाशी किए होगे या कुछ किसी को गाली दिए होंगे या कोई तुम्हें गाली दिया होगा, वो तुम्हारे दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो बखलाइदिंग गुरुजन देते हैं, उस बखलाइदिंग के प्रकाश में आप ध्यान करेंगे तो आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगेंगे। और देखिए, असलात से ही कहूँगा, लोग पूछते हैं, स्वामी जी, hoe moet ik weten dat ik heel dicht bij mijn bron ben aangekomen? Hoe moet ik dat weten? En er is maar 1 mooie mantra in de Upanishad. Yatha nadya sandamana samudrastam gachanti naamrupe vihaya. Hij zegt net een rivier vanuit zijn bron waar hij ontspringt,
Het heel ver. Hij kwam uit de oceaan. De wolken hebben hem geblazen naar de bergen. Daar is hij gaan regenen en daar begon hij te vloeien. En toen hij daar begon te vloeien, wat zag je daar? Een hele snelle troep. Stroomversnelling. Suriname जाके TBT सुला देखो, बालिंग सुला देखो, पानी बह रहा पूरा गाड़ी बहा ले जाए. लेकिन वही पानी लेओन्स बैरक के पास आकर देखो तो क्या देखोगे? शर्मा रही, धीरे धीरे रुक करके पानी समुद्र को मिल रहा. That's the fair van jouw bron bent. That's the troebel jij van binnen zult zijn. Als je denkt dat je heel troebel van binnen bent, en dat kan ik niet zien, वो आप ही जान सकते हो कि आपके अंदर कितना अनरस्त है. यदि तुम अंदर से अनरस्त हो तो समझ लेना भगवान से बहुत दूर हो. और यदि तुम्हारे मन में शांति ही शांति आने लगे, मन में ये आए, नौता जाना हुआ या पंडित रणधीर के मेडितात्सी आफत में जाना हुआ या तो इस मुतम आकर, और यदि आपने कहा नहीं भाई रणधीर जी को तो सुन नहीं हुई दे, चलो नौता में चलो वहाँ देवेंद्र शिवनाथ का बैठक गाना बज रहा है, ठन ठनाठन पे हो रहा है तो ठन ठनाठन पे में चले गए. इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मन शांत नहीं है. यदि स्वभाव से तुम्हारा मन मेडिटेशन की ओर जाता तो समझ लेते कि तुम क्या हो, अंदर से बहुत शांत हो और अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो. और यदि कोई भीड़ भाड़ तुम्हें पसंद है, इसका मतलब तुम भगवान से किलोमीटर नहीं मैलन बहुत दूर हो. याद रखना, ये मेडितात्सी को नापने का एक मापदंड मैं आपको दे रहा हूँ. तो बहुत सारी बातें, लेकिन समय क्या नहीं हम लोग हैं. इन शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. ऐसे में एक बार अमेरिका में समय से अधिक बोल गया तो एक लेडी आई, कहते ओ माय गॉड व्हाट कैन यू स्पीक सो मच. कभी ये बंद करे कभी ये बंद करे. तो मैंने उनको कहा वी आर वेरी गुड बिजनेसमैन, वी नीड टू सेल दिस इंफॉर्मेशन, वी नीड टू सेल दिस एज मच एज वी कैन एंड ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ एनर्जी. तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि सुशीला जी भी हमारे बीच में हैं और स्वामी जी भी आए हैं. स्वामी जी हमारे टीचर रहे हैं बाल्यकाल के, और स्कूल में मुझे याद है कि कोई भी टीचर, इतने सारे हिंदुस्तानी टीचर्स थे, लेकिन केवल ये साड़ी में से आती थी और देख करके तभी भी इतना अच्छा लगता था. लेकिन जितने अच्छे लगते थे साड़ी में उतने स्ट्रिक्ट भी थी. बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी और कभी मतलब संस्कारों को इस प्रकार से देते थे. मुझे याद है कि एक दिन एक स्टूडेंट को, हिंदुस्तानी स्टूडेंट को इन्होंने बहुत डांटा. इन्होंने वो छोटी कपड़े पहनकर आई थी और इन्होंने उनको इतनी खरी खोटी, मतलब अपने ढंग से और अच्छे से. उस लड़की ने बाद में कहा, कहते टीचर ने बहुत अच्छी बातें कही, थोड़ा हार्श तो था लेकिन अच्छे रूप से समझाया. और स्कूल में, जबकि एक नॉर्मल सरकारी स्कूल है जिसे हम आप लोग जानते हो, लेकिन ये फ्रोशीला जो है सदैव दिवाली के समय में, होली के समय में, कोई भी ऐसे कुछ होता था तो उस दिन क्लास में जरूर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी बच्चों को समझा जाती थी. माने अपने ड्यूटी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को देना हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात थी. और मैं इनको जब उन समय से जैसे देखा हूँ आज भी वैसे हैं कि इनका योग का प्रताप है, योग का प्रभाव है. तो मैं इन पर बहुत गर्व रखता हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज ये भी मेरे एक गुरु रूप में रही है, आज इस सभागार में उपस्थित है. तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति 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 शांति.